हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है सनी, आप लोग देख रहे हैं #हैशो चैनल। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूं मैं डिसेबल कैसे करें रून लॉसेस को एल्डर रिंग में। तो ये बेसिकली एक मोड है जिसको हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं एल्डर रिंग में, जो कि डिसेबल कर देगा, रून लॉस को होने से रोक देगा। तो बेसिकली बहुत ही ईजी स्टेप है। अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप वॉच करेंगे तो बहुत ही ईजी है, स्किप किए बिना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं राइट नाउ। दिखाते हैं मैंने क्या क्या स्टेप फॉलो किए हैं। गाइज, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वो फाइल है जो आपको डाउनलोड करना है। इसके अंदर 3 फाइल्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि 15-20 KB की ही हैं। सब फाइल्स को डायरेक्टली मैं एक्सट्रैक्ट फाइल में क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। जब आप लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको एक न्यू फाइल देखने को मिलेगा जिसका नाम एल्डर रिंग रून लॉस रहेगा। मैं मोड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे लोग देख पा रहे हैं वो मोड के अंदर DLL फाइल आपको देखने को मिल जाएगी डिसेबल रून लॉस की। आपको सिंपली अपना गेम का मेन फाइल लोकेशन ओपन करना है। मैं इसको साइड कर लेता हूँ। आपको सब फाइल कॉपी करने हैं, उसके बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे कि मैं पेस्ट कर दिया हूँ और रिप्लेस में क्लिक करके आपको सिंपली रिप्लेस कर देना है। जो आप नीचे आएंगे तो आपको एंटी चीट टॉगल मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करके डिसेबल कर लेना है। जैसे कि मैंने डिसेबल कर लिया, एंटी चीट डिसेबल्ड कर लिया। अपना गेम आप लोग यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और अपने डेस्कटॉप से भी ओपन कर सकते हैं, दोनों से ही काम करेगा। मैं अपना गेम यहाँ से ओपन किया हूँ, लेकिन आप लोग चाहे जहाँ से ओपन कर सकते हैं एज यू विश। गाइज, मैं आपको दिखाता हूँ मर के। यहाँ पे वो लोग देख पा रहे हैं मेरे पास 1650 रुपये कुछ करीब में ऐसे थे। अब मैं मर चुका हूँ। दोबारा गेम लोड होगा। और ये देखिए गाइस, पूरा पैसा है मेरे पास और मेरा रून लॉस नहीं हुआ। यानी इसका मतलब मेरा काम कंप्लीट हो चुका है और यहाँ सक्सेसफुली मोड इंस्टॉल हो चुका है। अब मेरा काम यहाँ से ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर कमेंट करना भूलना मत गाइस। D! Hey, what's up, man? How you doing? Yeah, Oscar, what's up? No, I'm keeping it tranquilo, bro. You know, I mean, demand is crazy down south, man. Crazy. Yeah, well, you know, the feds, they're not supplying the arms to the Mexican criminals, so someone's gotta step it. Oh, yeah, they need guns, bro. So many guns. Luckily for us, they're easily acquired up here. Yeah, well, that's our freedom's gift to the world, right? You American? Man, I didn't even know. Anyway, shit, it's gonna be profitable for the both of us. But completion is tough, bro. To control the market down there, we gotta control supply up here. We got a couple local contracts to help us out stateside. So this plane is loaded with their shipments. You make a couple drops, you come back here. You know, they say that the American industry is suffering, but you and I, we got a good export story. Okay. I'll be on the radio, man. That's great. Oscar!
Tango, Foxtrot, Whiskey. Oscar. Hey, oh, you're on the edge. I like that, I think. Okay, that plane is custom fitted for package drops. State-of-the-art radar, secure radio. It's tricked out, man. Really? Because it looks like it was made by a child for a school project. You're just a typical classic light aircraft enthusiast enjoying his midlife crisis. No profile. My middle name. Oscar! Tango, Foxtrot, Whiskey! Oscar! Hey, oh, you're on the edge. I like that, I think. Okay, that plane is custom fitted for package drops. State-of-the-art radar, secure radio. It's tricked out, man. Really? Because it looks like it was made by a child for a school project. You're just a typical classic light aircraft enthusiast enjoying his midlife crisis. No profile. My middle name. Okay, radar's working. You're up on the screen here. We got 2 deliveries. I put in the coordinates. You make the drops. You get out of there. Easy. Roger. Oscar. Trevor. Are you okay? You look way off course.